दो सिस्टम्स है, एक जो है वो नर्वस सिस्टम है और एक जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंड टुगेदर they are coordinated. Nervous system or endocrine system, they are together coordinated as a endocrine system. Nervous और endocrine दोनों एक साथ काम करते हैं as the neuroendocrine system. तो ये ध्यान में रखो. Another important thing that we should note is कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. आपको एक एमसीक्यू आएगा ही कि नर्वस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन एंडोक्राइन सिस्टम, कि एंडोक्राइन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन नर्वस सिस्टम. सो बोथ डिपेंड अपॉन ईच अदर. हर एक सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दे आर वर्किंग टुगेदर इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो ऑब्वियसली कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं? वी हैव सो मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इसके पहले हमें हार्मोन्स के प्रॉपर्टीज करने हैं. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स? हाउ डू द हार्मोन्स फंक्शन? क्या होते हैं ये हार्मोन्स? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हार्मोन्स कम फ्रॉम द वर्ड हार्मा. हार्मो मीन्स टू stir or it means to excite. The meaning of the word horma means to stir or to excite. तो ये हार्मोन शब्द का मतलब है एक्साइट होना या स्टर करना, मिक्सिंग करना. हार्मोन्स को और एक नाम दिया है. हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑटोकॉइड्स. हार्मोन्स के लिए जो और एक नाम है वो क्या है? ऑटोकॉइड्स. याद रखो. See, hormones are made by endocrine glands only, but there are some organs जैसे हार्ट है ना, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सब भी हार्मोन बनाते हैं. आप बोलोगे सर ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो ये लोग हार्मोन कैसे बना रहे हैं? बिकॉज दे हैव गॉट सम एंडोक्राइन सेल्स. तो जहां भी एंडोक्राइन टिश्यू है वो पार्ट हार्मोन बना सकता है. तो ये मत सोचो कि ऑर्गन्स कैसे बना रहे हैं. आपको पता है ना, हार्ट बनाता है, किडनी बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्मोन्स है ना. तो ये हार्मोन्स कैन बी मेड बाय एंडोक्राइन सेल्स. ऑर्गन्स के पास कुछ ऑर्गन्स में एंडोक्राइन सेल होते हैं, वो भी हार्मोन बना सकते हैं. अभी मिक्स्ड ग्लैंड्स, यू ऑल नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स. सबको ये बात पता है? मेन ये दो है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. तो ये दोनों में मेनली डिस्टिंग्विश क्या कैसे करते हैं हम? कि एंडो मतलब जो इंटरनल सिक्रीशन करते हैं. द वर्ड एंडोक्राइन मींस दे आर द ग्लैंड्स ऑफ द इंटरनल सिक्रीशन. दैट्स व्हाई इनको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन, इंटरनल सिक्रीशन. एक्सोक्राइन मतलब क्या? दे सिक्रीट ऑन द सरफेस. सो एंडोक्राइन इंटरनल सिक्रीट करेंगे, एक्सोक्राइन एक्सटर्नली सिक्रीट करेंगे. एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं दे आर डक्टलेस. यार ये डक्टलेस मतलब क्या? दे डू नॉट हैव एनी डक्ट. तो इनके जो सिक्रीशंस है हार्मोन्स, दे आर कैरीड बाय द ब्लड. तो हार्मोन का अगर चेकअप करना है तो सिंपल अपने को ब्लड टेस्ट करना है. So they are ductless, so they are carried by the blood. और exocrine glands में they are with ducts. Endocrine ductless है, ये ducts के साथ है. ये internal secretion है, ये surface secretion, external secretion करते हैं. तो ये कुछ points याद रखो. और एक glands है जो mixed glands है. Mixed gland ऐसे होते हैं जो endocrine भी होते हैं और exocrine भी होते हैं. So उनको heterocrine बोलते हैं. The heterocrine glands are also called as the mixed glands. Can anyone tell me any example of
हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड? कोई भी एग्जांपल है आपके पास? एक तो है पैंक्रियास, और उसके बाद के जो दो मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत लोग को लगता था कि वो प्योरली एंडोक्राइन है। उनके नाम में बताऊं, दैट इज वन इज द टेस्टीज, वन इज द ओवरीज. सो मेनी पीपल यूज्ड टू फील दैट ये जो टेस्टीज और ओवरीज है ये एंडोक्राइन में ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है. जो टेस्टीज और ओवरीज है, आर दे ओनली एंडोक्राइन? नो, दे आर मिक्स ग्लैंड्स. दे आर नॉट ओनली एंडोक्राइन, वो लोग एक्चुअली मिक्स्ड है. क्योंकि देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक ही काम है, हार्मोन बनाना. अभी टेस्टिस का भी काम है हार्मोन बनाना, टेस्टोस्टेरॉन. ओवरीज का काम है ईस्ट्रोजन. लेकिन उसके साथ वो दूसरा भी काम कर रहे हैं. टेस्टिस एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन वो स्पर्मेटोजेनेसिस भी कर रहा है, स्पर्म बना रहा है. ओवरीज ओवम बना रहा है, oogenesis कर रहा है. उसमें बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं. सो दैट इज द रीजन टेस्टिस और ओवरीज रियलिटी में मिक्स्ड ग्लैंड्स है. समझा सबको? दे आर नॉट प्योरली endocrine, they are the mixed glands along with the pancreas. तो पैंक्रियास के साथ में ये एक तरह से ये एक मिक्स ग्लैंड है. Now I'll show you one PDF, higher details of notes. So understand here that the, ये मैंने आपको बताया, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन. पहला हार्मोन जो आइसोलेट हुआ था, दैट वाज सिक्रेटिन. ठीक है, समझो पहला हार्मोन कौन सा था जो आइसोलेट हुआ था? सिक्रेटिन. हार्मोन्स को डिस्कवर किसने किया था? बेलिस एंड स्टार्लिंग. ओके, बेलिस एंड स्टार्लिंग ने हार्मोन्स डिस्कवर किए थे, लेकिन हार्मोन ये नाम किसने दिया था? स्टार्लिंग ने. स्टार्लिंग ने ये नाम दिया था हार्मोन. नासी हार्मोन्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर बायोजेनिक इन ओरिजिन. मतलब क्या? दे आर मेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर मेड बाय द लिविंग सेल्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल्स बनाते हैं, लिविंग सेल्स है, तो बायोजेनिक है. ये लोग के सिक्रीशंस जो है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं. So their secretions are directly released into the bloodstream. ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग बनते हैं एक जगह पे. सी, दे आर टारगेट स्पेसिफिक. What is the meaning of target specific? They are produced in one part of the body, but they show their effect on some distant part, far away part.
दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, जैसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड ओनली 600 to 2000 daltons. तो दे आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट. प्रोटीन्स होते हैं दे आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट. अभी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट इज 68,000 daltons. समझा? तो इसके कंपैरिजन में हार्मोन्स से लो मॉलिक्यूलर वेट है और वो इतने पावरफुल है कि दे एक्ट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. वी डू नॉट रिक्वायर देम इन हाई अमाउंट्स. एकदम छोटा सा काफी हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, पोटेंट है. दे आर नॉन एंटीजेनिक. मतलब क्या? ये लोग के पास एंटीजन नहीं होते. हॉर्मोन्स का एक्शन शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ समय के लिए वो रहते हैं, बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा हार्मोन जमते जमते ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं होता कभी. और ऐसा बोलना नॉर्मली हार्मोन्स एक्ट स्लो एंड स्टेडी फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये बात बराबर है. हार्मोन्स का नॉर्मली काम स्लो एंड स्टेडी होता है लंबे समय के लिए, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो फास्ट काम करते हैं, जैसे एड्रेनालिन. इमरजेंसी में पता है ना, एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनालिन बनाता है, दैट इज एन इमरजेंसी हार्मोन. ये बहुत फास्ट बनता है. जो हार्मोन्स इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, देखो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो when they are produced by the endocrine glands, they are in the inactive state, so they are called as the pro hormones. What is the meaning of the word pro? Means inactive. जैसे enzymes में भी same है. Inactive enzymes are called pro enzymes. जैसे पेप्सिनोजेन, बाद में बनता है पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन. समझा? तो ये सब प्रो एंजाइम्स है. वैसे यहाँ भी प्रो हार्मोन्स है, जैसे प्रो इंसुलिन, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन जो इनिशियली जो बनता है वो होता है प्रो इंसुलिन. बाद में वो एक्टिवेट होकर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है. हार्मोन्स आर टारगेट स्पेसिफिक, मैंने आपको बताया. उनका जहां टारगेट है वही काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे. ब्लड से ट्रांसपोर्ट होंगे. मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा हार्मोन्स जो है दे आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर एंड किडनी. यूरिन से पास आउट हो जाते हैं. हार्मोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. सम हार्मोन्स आर अमाइंस, मतलब दे हैव द अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप. सो अमाइंस, यस, अमाइंस जो होते हैं दे आर हैविंग अमीनो ग्रुप. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, याद रखो. उसमें एग्जांपल, एक तो थायराइड का हार्मोन है थायरोक्सिन, और एड्रीनल मेडुला के हार्मोन है. एड्रीनल मेडुला मतलब पता है ना, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन. एड्रेनालिन का दूसरा नाम है एपिनिफ्राइन. नॉर एड्रेनालिन का दूसरा नाम है नॉर एपिनिफ्राइन. तो ये जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टीरॉइड हार्मोन्स है वो लोग फैट सॉल्युबल होते हैं. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल. स्टीरॉइड से तो कोलेस्ट्रॉल से आएगा, फैट सॉल्युबल है. अभी स्टीरॉइड हार्मोन्स कौन से? एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो भी हार्मोन है, और ऑल द सेक्स हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स आर ऑलवेज स्टीरॉइडल. टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल, रिलैक्सिन. और एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो है जैसे एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन. और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी है जो प्रोटीनेशियस है या पेप्टाइड हार्मोन्स है. सम आर प्रोटीनेशियस और दे आर द पेप्टाइड हार्मोन्स. इनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स है, दे आर वाटर सॉल्युबल. पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब ये सब है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, है ना. ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स आर मोस्टली पेप्टाइड हार्मोन्स. ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑल ऑफ देम. याद रखो हार्मोन्स विटामिन नहीं होते, हार्मोन्स एंजाइम नहीं होते.
जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट होता है, बराबर। एंजाइम और हार्मोन में मेन फर्क क्या है कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, और एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन ही होते हैं, हार्मोन प्रोटीन, अमाइन, पेप्टाइड। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, दे स्पीड अप द रिएक्शन बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। लेकिन हार्मोन्स का उल्टा है, हार्मोन्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन। So they are very important. They're taking part in the reaction. Remember that. ठीक है। सो देखो, नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल में मेन क्या फर्क है। जो ब्रेन का काम होता है वो फटाफट होता है, हार्मोन्स का स्लो और स्टेडी होता है। ब्रेन में नर्व इंपल्सेस होते हैं, हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स बोलते हैं। नर्वस इसका काम न्यूरॉन से होता है, इसका काम ब्लड से होता है। ये लोग शॉर्ट काम करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह फास्ट काम करते हैं। ये लोग स्लो एंड स्टेडी, दे वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर है ना, हमेशा याद रखो, एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव फीडबैक या निगेटिव फीडबैक। देखो कैसा होता है कि अभी ये हाइपोथैलेमस है, ऑलवेज है ना, 3 लेवल पे ये काम करते हैं। ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, ये हो गया लेवल 3। ऑलवेज वर्क एट 3 लेवल्स। लेवल 1 पे हमेशा कौन होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। लेवल 2 पे कौन होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। आई नो पिट्यूटरी में 2 पार्ट्स है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया पिट्यूटरी, ये हो गया थायराइड ग्लैंड। देखो सारे ग्लैंड्स का बॉस कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आप जब ऑर्केस्ट्रा में जाते हो, ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं। वो म्यूजिशियंस को एक बैंड मास्टर है ना कंट्रोल करता है, वो उनको बोलता है कि क्या कब बजाना है, एक बैंड मास्टर होता है। तो ये पिट्यूटरी जो है ये बैंड मास्टर है। ऑर्केस्ट्रा में पिट्यूटरी कौन है? बैंड मास्टर है। और ये जो अलग अलग ग्लैंड्स है ये सब म्यूजिशियंस है। एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, राइट, ये सब म्यूजिशियंस है। सो ग्लैंड्स यहाँ बदलते रहेंगे, उनका बैंड मास्टर वही रहेगा, कौन? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी का बॉस कौन है? वो फिक्स्ड है, हाइपोथैलेमस। जैसे आपको पता है फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, बोलते थे ना हम लोग, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास ओपर बाय फ्रॉग, फ्रॉग बाय स्नेक, स्नेक बाय ईगल। या फिर ग्रास इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट बाय स्नेक, स्नेक बाय ईगल। जो भी करे, लेकिन शुरुआत ग्रास से ही होती थी। तो ऐसे यहाँ पे शुरुआत हाइपोथैलेमस से होगी। हाइपोथैलेमस है ना, डिसाइड करता है, रिलीज करता है रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर, आरएफ या आईएफ। रिलीज करो या इनहिबिट करो, हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। और ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक पहुंचता है। फिर पिट्यूटरी अपने इंडिविजुअल हार्मोन्स को जो है वो रिलीज करेगा। और फिर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है, पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है, दे विल एक्ट ऑन द इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, इट इज लाइक दैट। अभी और भी कैटेगरी होती है, जिससे देखो हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। तो कोई कोई हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो लोग डायरेक्टली सेल में एंटर ही नहीं होते। जैसे मेनली जो पेप्टाइड हार्मोन्स है, समझा, पेप्टाइड हार्मोन्स है ना, वो क्या करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन में जाके एचआर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स भेजता है। सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से होते हैं? साइक्लिक एएमपी या IP3, यार आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ओके। सो या कैल्शियम आयंस, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है।
और ये जाके फिर अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे, न्यूक्लियस पे काम करते हैं और जो भी बदलाव है वो लाते हैं। सो कोई कोई हार्मोन्स है ना डायरेक्टली एंटर ही नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन तक ही जाते हैं और फिर वो सेकेंडरी मैसेंजर्स भेज के जो भी उनको रिस्पॉन्स करवाना है वो अंदर रिस्पॉन्स इनिशिएट करवाते हैं। और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जैसे थायरॉक्सिन एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये लोग डायरेक्टली, क्योंकि वो लोग लिपिड सॉल्युबल होते हैं, सो डायरेक्टली ये लोग सेल के अंदर एंटर होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे एचआर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो स्टीरॉयड एंड थायराइड डायरेक्टली न्यूक्लियस पे जाके एचआर कॉम्प्लेक्स बना के फिर सीधा उसके एमआरएनए पे काम करता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है डीएनए इंटू आरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए इंटू प्रोटीन्स। So there are two types, some directly enter the cell, some do not directly enter the cell. अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो बचपन से फटाक से आप लोग आंसर करते आ रहे हो थायराइड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? थायराइड। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन करेंगे विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, कभी भी नीट में मैंने देखा है स्टूडेंट्स थायराइड ही लिखते हैं, ये लिवर लिवर लिखते हैं। सॉरी, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लिवर है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? लिवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड लिवर नहीं है, क्योंकि लिवर एंडोक्राइन ग्लैंड ही नहीं है, लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सो एंडोक्राइन की कैटेगरी में लार्जेस्ट है थायराइड। यस, उसका लिवर से कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन वो लार्जेस्ट है। ये देखो थायराइड 25 ग्राम्स का, इट इज द लार्जेस्ट इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिस्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो आधा ग्राम है, राइट। और जो सबसे छोटा, बाकी ऐसे वेट हर एक का पूछेंगे नहीं आपको, पर सबसे जो छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सा है? दैट इज द, यस, दैट इज द पीनियल ग्लैंड, 5 milligrams, राइट, इट इज 5 milligrams। इतना छोटा है, देखो पीनियल ग्लैंड सबसे छोटा है पिट्यूटरी से भी। सो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल। अभी हार्मोन्स कौन बनाता है? अभी सबको यही लगता था कि सबसे ज्यादा हार्मोन कौन बनाता है, सब लोग बोलते थे पिट्यूटरी पिट्यूटरी। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है हार्मोन 7, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 0 हार्मोन है, देखो इसलिए लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब बोलोगे नाम ही नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन बनाता नहीं है, वो खाली रिलीज करता है। बनाता हाइपोथैलेमस है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स है जैसे कि एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ये हाइपोथैलेमस बनाता है, पिट्यूटरी से स्टोर करके रिलीज करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्मोन्स कौन बनाता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। देखो किसने है, एमसीक्यू आ सकता है। 46 हार्मोन्स आर मेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। मेडुला के 2 है, मेडुला के तो दोनों का नाम भी इजी है, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन, या एपिनेफ्राइन नॉर एपिनेफ्राइन। अभी वर्ड एंडोक्राइन किसने दिया? साइंटिस्ट बर्नार्ड ने। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर स्टडी किया था सैंगनर ने।
बट पैंक्रियास 60 ग्राम है बराबर है, लेकिन पैंक्रियास इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। प्योर एंडोक्राइन है क्या? वो मिक्स्ड है ना, समझा? हम लोग क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा कौन है? पैंक्रियास एंडोक्राइन ही है, मिक्स्ड है, हेट्रोक्राइन है। अंडरस्टूड? चलो देन लेट अस कंटिन्यू। सो आई वाज डिस्कसिंग विद यू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी कुछ इंट्रोडक्शन पे एमसीक्यूज करते हैं rather than doing the entire chapter at a time. चलो मुझे बताओ नाउ, एमसीक्यू नंबर 1। सॉल्व एमसीक्यू नंबर 1 हियर। Read the following statement, select the correct option. Chemical coordination is an integrated system and functions through hormones. Nerve fibers of the neural system do not innervate all cells of the body. Innervate any supply. Only one student has answered. Ankita is saying B.
1 is incorrect, 2 is correct. नहीं अंकिता, 1 उल्टा correct है. Chemical coordination is an integrated system. बराबर है ये, and works through hormones. Chemical hormones ही काम करेगा. And nerve fibers do not innervate all the cells of body. ये भी right है. आज मुझे बताओ, red blood cell, white blood cell, क्या nerve fibers red blood cell तक जाते हैं, white blood cell तक touch होते हैं? So both statements are correct. Answer will be C. समझा? Both statements are correct because जो बहुत सारे बॉडी के सेल्स है वहां नर्व फाइबर्स डायरेक्टली नहीं जाते, इनडायरेक्टली जाते, बट दे डू नॉट इनर्वेट डायरेक्टली. एवरीवन सॉल्व एमसीक्यू नंबर 2. चलो सब लोग सॉल्व करो. टू का ए बोल रहे, सब लोग चेक करो. See, endocrine glands release their secretion directly into the blood. Endocrine glands are ductless glands. तो क्या endocrine glands अपने secretions को directly blood में release करते? Yes. Are they ductless? Yes. So very good. A is right. Both assertion and reason are true, and it is the correct explanation. क्योंकि वो ductless होते, क्योंकि वो ductless है, that is why they have to release directly into the blood. ये solve करो. Question number 3. थ्री का डी बोल रहे हो, चेक करता हूं. Which of the following is an endocrine body? Very good. Testes will be endocrine. बराबर है, क्योंकि बाकी देखो ये सब ऑर्गन्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किडनी, टेस्टिस इज एंडोक्राइन. फोर्थ वाला सॉल्व करो. हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द
Very good. Hypothalamus is a part of the diencephalon. That is right. Diencephalon forebrain का part है यार, thalamus, epithalamus, hypothalamus. Perfect. It is a part of the diencephalon. चलो अभी मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूं आपके लिए. So see, pituitary gland is called as the hypophysis. Hypophysis क्यों? क्योंकि ये cerebrum के नीचे होता है, छोटा सा. It is called hypophysis or it is called as the hypophysis cerebri. ये याद रखो. और उसका नाम पिट्यूटरी दिया था वेसेलियस ने. जो एम्फिऑक्सिस के मुलर्स ग्लैंड है. होमोलोगस का मतलब जानते हो? होमोलोगस मतलब जो सिमिलर है. तो एम्फिऑक्सिस सिफेलोकॉर्डेटा है, उसका जो मुलर ग्लैंड है. और हर्डमैनिया मतलब यूरोकॉर्डेटा, उसका जो सब न्यूरल ग्लैंड है. इट इज सिमिलर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. वेट 0.5 ग्राम में मैंने बताया हाइपोफाइसिस. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने को बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टॉमी. जहां भी वर्ड स्टूडेंट्स लास्ट में एक्टॉमी आता है, दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ दैट पार्ट. जैसे ट्यूबेक्टॉमी, vasectomy. So that is why it is called as the hypophysectomy. पिट्यूटरी के आपको पता है एंटीरियर लोब 75% है, पोस्टीरियर छोटा है. एंटीरियर लोब में पास डिस्टालिस, ट्यूबरालिस, इंटरमीडिया आता है. मेन उसमें जो है वो पार्स डिस्टालिस है. राइट. एंटीरियर लोब कहां से डेवलप होता है? रातकेस पाउच. डेवलप्स फ्रॉम द रातकेस पाउच. पोस्टीरियर लोब में दो सेल्स होते हैं, पिट्यूसाइट्स जो हार्मोन स्टोर करते हैं, और हेरिंग्स बॉडीज. हेरिंग्स बॉडीज जो होते हैं ना, दे आर द एक्सॉन नॉब्स. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हाइपोथैलेमस से जो आ रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे पिट्यूटरी में जो जा रहे हैं. तो ये जो एक्सॉन के नॉब्स है, इसको हेरिंग्स बॉडीज बोलते हैं. अब ये डायग्राम से आपको क्लियर समझेगा कि पिट्यूटरी का जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करता है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के लिए है ना. फिर प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स को, ग्रोथ हार्मोन बोन्स को, देन एफएसएच, एलएच पता है ना, टेस्टिस ओवरीज को, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन सेल्स को, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एडीएच किडनी को, ऑक्सीटोसिन यूटरस को. सो ग्रोथ हार्मोन वो है जो बॉडी की ग्रोथ करवाता है. ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया बच्चों में तो क्या होता है? ड्वार्फिज्म. इसको हम लोग नैनिज्म भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड नैनिज्म या एटेलियोसिस. बच्चों में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नैनिज्म या एटेलियोसिस. दैट इज द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड. मिजेट्स भी वैसे ही होते हैं, ड्वार्फ जैसे, बट मिजेट स्टेराइल भी होते हैं. जो सर्कस के जो ड्वार्फ आते, पता है? सर्कस, सर्कस पुराने पुराने सर्कस में बौने होते थे ना, छोटे छोटे, वो मिजेट्स होते थे. और अगर
एडल्ट में देखो, अगर बच्चों में कम हो गया तो डॉर्फिज्म या नैनिज्म, एटेलियोसिस। बच्चों में ज्यादा हो गया तो गाइगेंटिज्म। और एडल्ट में अगर ज्यादा हो गया तो ये देखो एक्रोमेगाली, इट लुक्स लाइक अ गोरिल्ला। गाइगेंटिज्म या एक्रोमेगाली देखो, हंचबैक, फेस थिक स्वोलन, ठीक है, एनलार्ज हैंड्स फीट। ठीक है, फिर उसके बाद let us understand the other hormone is, that is prolactin. What work this prolactin is doing? It is activating the mammary glands. प्रोलैक्टिन के देखो कितने सारे नाम है, दैट इज लैक्टोजेनिक हार्मोन, गैलेक्टोजेनिक हार्मोन, मैमोट्रोफिन। सो activates the mammary glands hormone for the milk production। और ये हार्मोन कम हो गया तो होता है ए गैलेक्टिया, यानी मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको पता है एक्ट्स ऑन द टेस्टिस टू मेक द स्पर्म्स, एंड ओवरीज में ओवम बनाता है और प्लस ईस्ट्रोजन रिलीज करने में हेल्प करता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएच, फीमेल में एलएच बोलते हैं, मेल में उसको आईसीएसएच बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेल्स में क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करना। टेस्टोस्टेरॉन इज लाइक एंड्रोजेंस। फीमेल में इसका क्या काम है? एलएच का ओव्यूलेशन करना। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा टू मेक द एड्रीनल हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा? थायराइड के ऊपर, सो दैट थायराइड ग्लैंड कैन मेक द हार्मोन। एमएसएच जो है ना स्टूडेंट्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पार्स इंटरमीडिया, पिट्यूटरी का जो इंटरमीडिएट लोब है वो बनाता है। और पिट्यूटरी का इंटरमीडिएट लोब हम लोग में वेस्टिजियल है। तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये लोअर एनिमल्स में मेलानिन यानी स्किन कलर को कंट्रोल करता है, डार्कनिंग, स्किन को डार्क करता है। हम लोग में ये वेस्टिजियल है। Melanocyte stimulating hormone in our body is vestigial. Remember that. It is secreted by what? Pars intermedia. देखो वैसोप्रेसिन तो आपको पता होगा, वैसोप्रेसिन इज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। किडनी चैप्टर में भी किया है आपने। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? एक अब्जॉर्ब्स द वाटर, ब्लड वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, पानी को अब्जॉर्ब करेगा एक्सेस, so that blood pressure will increase, so it is called vasopressin। डायूरेटिक मतलब जो यूरिन को ज्यादा जाता है, जाने देता है। एंटी डायूरेटिक मतलब जो यूरिन को घटाता है। और ऑक्सीटोसिन आपको पता है, इट इज फॉर द चाइल्ड बर्थ। ऑक्सीटोसिन का और एक नाम है पिटोसिन।
It is called as a delivery hormone, helps in parturition, also helps in milk ejection. So contractions करता है ये तीन जगह पे, एक तो smooth muscles of the uterus causing parturition या delivery, also helps in contractions of the, it helps in the contractions of the fallopian tube, so that helps in fertilization and contraction of the epithelial cells of the breast, causing the milk ejection. So milk producing hormone prolactin है, mammotrophin, lactogenic hormone एक ही नाम है उसके, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन. देखो मैंने बताया था पिट्यूटरी इज द मास्टर एट ग्लैंड, सीईओ या लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा. मैं आपको मेरे नोट्स कुछ शेयर करता हूँ. So this is a table for the hormones of the adrenal gland. Adrenal gland मेरे को तीन zones है, cortex है, एक medulla है. Cortex में तीन zone है, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. तो जो कॉर्टेक्स है उसके हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड द एड्रिनल एंड्रोजेंस. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन आता है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, अलग अलग वैरायटीज है उसके. ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. तो ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी मेंटेन रखता है, आरबीसी बनाने में हेल्प करता है. देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है ना, उसमें आता है एल्डोस्टेरॉन, व्हिच कम्स इन द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में ये काम करता है, याद है? helps in increase sodium reabsorption, so increases the blood pressure, increases the glomerular filtration rate. एड्रीनल एंड्रोजन से मेल फीमेल दोनों में बनते हैं. मेल में मेल एंड्रोजन है, फीमेल में फीमेल से. लेकिन अगर ये मेल में बढ़ गए या फीमेल में बढ़ गए तो कुछ डिसऑर्डर होते हैं. वो डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे, सी अगर मेल में हो गया तो मेल गेट्स सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, enlarged breast and other problems. फीमेल में अगर एड्रीनल हार्मोन ज्यादा हो गए तो उसको बोलते हैं एड्रीनल विरिलिज्म. Adrenal virilism is also called hirsutism, in which the female gets male-like characters, जैसे दाढ़ी मूछ, rough voice. That is adrenal virilism या hirsutism.
एड्रीनल मेडुला के तो आपको पता है, adrenaline, noradrenaline, they are called catecholamines. Category is called as catecholamines. They act during the stress. ये हमने ब्रेन चैप्टर में भी करा था. So let's see some pituitary adrenal hormones के MCQs. So solve MCQ number 5 here. Identify the incorrect statement. It's very good. What answer you given? 5 का D, कोई A बोल रहा है, कोई D बोल रहा है. Identify the incorrect पूछा है. GH is hormone secreted by hypothalamus. Yes, very good. That is incorrect. देखो hypothalamus में neurosecretory cells है, obviously because they are secreting the neurohormones, releasing and inhibiting factors. GnRH synthesis of gonadotropins. Gonadotropins मतलब कौन? जो gonads को stimulate करते हैं. Gonad यानी reproductive glands, that is testes and ovaries. Somatostatin inhibit release of the growth hormone. ये भी right. ये somatostatin or inhibit the release of GH from pituitary, and growth hormone is hormone secreted by hypothalamus. No, it is secreted by pituitary, that is for sure. Growth hormone का releasing factor जो है वो hypothalamus से बनता है. Yes, so solve MCQ number 6 now, which is the inhibitory hormone of GH. कौन सा हार्मोन है जो GH यानी ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है?
Okay, right. Somatostatin is perfect because that is the one which stops the pituitary. Very good. Yes, seventh answer though. Which portion of hypophysis? Hypophysis यानी कौन? Pituitary secretes maximum number of hormones. Maximum number को secrete करने वाला कौन है? Is it pars distalis, pars intermedia, pars nervosa, की islets of Langerhans? सब लोग अलग दे रहे आंसर. आंसर इज ऑब्वियसली ए, पार्स डिस्टालिस. देखो पार्स इंटरमीडिएट तो एक ही हार्मोन बनाता है, एमएसएच, मेलानोसाइट्स में, और वो भी हम लोग में वेस्टिजियल है. नर्वोजा तो सिर्फ स्टोर करता है पिट्यूसाइट्स में. पार्स डिस्टालिस मैक्सिमम. एमसीक्यू नंबर 8 सॉल्व करो. पार्स इंटरमीडिएट का कौन सा है? मैंने अभी भी बताया था. Yes, so that answer is perfect. 8 is C. That is the melanocyte stimulating hormone, which controls the melanin levels. Very good. Skin pigmentation को control कौन करता है? MCQ number 9. Which of the following hormone regulates the pigmentation of the skin? FSH, MSH, TSH, both A and B. Yes, 9 answer is B. That is the MSH, melanocyte stimulating hormone. हाँ ये बताओ, ये मैंने अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यू कैन आंसर
which are the, see, posterior pituitary gland जो है, that is the neurohypophysis. It is not a true endocrine gland. It is an endocrine gland, but not entirely true endocrine gland. So what could be the reason? Very good. 10 answer is C. It only stores and releases the hormones. Perfect. ये सिर्फ स्टोर करता है, रिलीज करता है पिचू साइड से, पार्स नर्वोसा, बट बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस. Which of the following hormones, though synthesized elsewhere, synthesized elsewhere मतलब बनता कहीं और है, but it is only stored and released by the master gland. लोग ने ऐसा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा है. It is synthesized elsewhere, but it is only stored and released by the master gland. So, which is that hormone? Yes, 11th is also B, antidiuretic hormone, because वो posterior pituitary का hormone है ADH. So, which is the hormone that acts on the Sertoli cells and stimulate process of spermiogenesis. Spermiogenesis या spermatogenesis. That is okay. Sertoli cells पे जो काम करता है. I don't know whether you are aware or not. The Sertoli cells, they are called as the nurse cells. Sertoli cells को nurse cells बुलाते हैं. Very good, right answer. FSH, follicle stimulating hormone. The answer is FSH, follicle stimulating hormone. So it is that hormone which acts on the testes, seminiferous tubules for production of sperms. Sertoli cells, they are the nerve cells. They help in giving nutrition to the sperms. 13th, which of the following hormone is responsible for formation of the milk? Milk producing hormone कौन सा है?
Number 13. Yes, very good. The answer is prolactin. Oxytocin mat likhna. It is a milk ejecting hormone. Yes, right. What is the function of prolactin? MCQ number 14. प्रोलैक्टिन का एक्शन क्या है? 'Very good, Ashish, Simona, Sania, Nikita. Answer is B. It regulates the growth of mammary gland and formation of milk. That is perfect. 15 try karo. Identify the hormone that maintains the corpus luteum. Corpus luteum जो है ना ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर से ओव्यूलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस लूशियम, तो उसको मेंटेन कौन रखता है पहले 3 महीने तक? Very good. 15 is A. Progesterone. Progesterone is a pregnancy hormone. First 3 महीने तक 3 months तक corpus luteum को रहना है to release progesterone. After that, the placenta takes over the role. 16 वाला आंसर करो. Which of the following hormone is responsible for the uterine contraction during parturition?
16 16 का ए नहीं आएगा. वेरी गुड. सिमोना, सानिया एंड स्वर्धा. सी आएगा. देखो ये जो ए है ना, रिलैक्सिन है ना, ये रिलैक्सिन डिलीवरी के बाद बनता है. पार्चुरेशन हार्मोन नहीं है. पार्चुरेशन होने के बाद ये रिलैक्सिन बनता है टू रिलैक्स द, मतलब डिलीवरी के टाइम पे भी टू रिलैक्स द पेल्विक लिगामेंट्स एंड पोस्ट डिलीवरी टू मिनिमाइज द strain and reduce the bleeding. So oxytocin is right. 17 solve karo. Who is secreting melatonin? Melatonin is secreted by 17. B. Nikita is saying, Swarda is saying D. Very good. Hormone melatonin is secreted by, नहीं नहीं नहीं, pineal body आएगा. Pineal body. 17 का D right है. 18 18 solve करो. पिनियल ग्लैंड. देखो सीरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये दोनों हार्मोन पिनियल ग्लैंड के हैं. ओके, एड्रीनल के नहीं है. सो 18 सॉल्व करो. पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड. देखो सबका आंसर अलग है 18 का. सी कोई बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है. बट pineal gland will be on the dorsal side of the forebrain. Very good. That is right. Perfect. Melatonin 19.1. Melatonin regulates all of the following except. Melatonin सारी चीजें regulate करता है except one thing. What is that one thing? Melatonin regulates 19 is, देखो melatonin regulates all of the following except. देखो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल, पिगमेंटेशन. वेरी गुड. डायूरेसिस कंट्रोल नहीं कर सकता. वेरी गुड आंसर. अभी थायराइड के एमसीक्यूज है. थायराइड का हम करेंगे.
पहले एड्रीनल के एमसीक्यूज करते हैं। 32 सॉल्व करो। आइडेंटिफाई द एक्स इन द बिलो। नंबर 32। परफेक्ट। 32 का डीएससी नहीं आएगा सिमोना। डी एड्रीनल ग्लैंड, बस इट इज, ये किडनी है और किडनी के ऊपर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड है। (33) adrenal glands are found in close association with एड्रीनल ग्लैंड का एसोसिएशन किसके साथ है? वेरी गुड, विद द किडनी। परफेक्ट। हाँ, ये वाला भी अच्छे से सॉल्व करो। एंगर इन पर्सन, असर्शन और रीजन दिया है। एंगर इन पर्सन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनालिन, noradrenaline are the hormones secreted by adrenal medulla, prepare the individual for fight flight. Very good. 34 का आंसर इज ए, सिमोना, यू आर राइट। बोथ assertion reason are true and it is a correct explanation. देखो, एंगर इन पर्सन, गुस्से में कौन से हार्मोन बनते हैं? एड्रिनल मेडुला से, वही बनते हैं एड्रिनल, यही दो बनते हैं, एंड दे आर सिक्रीटेड बाय मेडुला। बराबर है ये। So solve 35 now.
MCQ number 35th. थर्टी फाइव का आंसर नहीं दिया है. Hormone adrenaline increases blood pressure, definitely blood glucose, and 1 3 तो पक्का है. ब्लड ग्लाइकोजन ही उल्टा, वो उल्टा काम करता है. एंड ब्लड कैल्शियम. So will it increase the calcium level of blood? Someone is saying B, someone is saying D. I think it will be D. Very good. कैल्शियम क्यों इंक्रीज करेगा उसका? थर्टी सिक्स. एपिनेफ्राइन यानी एड्रेनालिन क्या है? ओके समाना. 36 का बी बोल रहा है कोई. सिक्रीटेड सी एड्रीन एपिनेफ्राइन या एड्रेनालिन कौन बनाता है? एड्रीनल मेडुला. ये तो बात पक्की है. तो सी और डी तो वैसे भी रॉन्ग हो गया. एंड ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. इमरजेंसी हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है. एड्रीनल ग्लैंड इज अ क्राइसिस ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी. सो आंसर विल बी बी. ये देखो अभी एड्रीनल में अभी अभी मैंने आपको बताया जोन्स कौन से है. What are the zone of the adrenal gland? Outside to inside. Number 37. Identify the correct order of the layers from outside to inside. ओके सब लोग भी बोल रहे हैं. 37th. जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलाटा रेटिकुलरिस. वेरी गुड. कैसे याद रखो पता है? जीएफआर याद रखो. रिमेंबर लाइक दिस जीएफआर. किडनी में है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो जीएफआर ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलाटा रेटिकुलरिस. Solve MCQ number 38. Chemically
एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन क्या है? मॉर्फिन है, कैटेकोलामाइन है, स्टेरॉइड्स है कि गोनाडोट्रोपिन्स है? यस 38 का राइट योर। सी मॉर्फिन क्या होता है पता है? मॉर्फिन इज अ पेन किलर। मॉर्फिन तो नहीं आएगा, मॉर्फिन पेन किलर है, स्टेरॉइड्स तो नहीं है। गोनाडोट्रोपिन तो एफएसएचएलएच है, इट इज कैटेकोलामाइन्स। इट इज दी कैटेकोलामाइन्स। 39th, which are showing anti-allergic या anti-inflammatory effect। इसमें से कौन से एंटी एलर्जिक या एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाते हैं? थर्टी नाइन्थ का भी है, वेरी गुड, राइट आंसर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो तो एल्डोस्टेरोन है, सिक्स कॉर्टिकॉइड्स तो एंड्रोजन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज परफेक्ट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक। ऑड मैन आउट ढूंढो विद रिस्पेक्ट टू द एंडोक्राइन स्टेटस ऑफ द ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हिसाब से इसमें कौन सा ऑड मैन आउट है? फोर्टी का बी है, पैंक्रियास, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट। अभी देखो, लेट्स मूव ओवर टू द अदर ग्लैंड्स, दैट इज थाइमस एंड पैंक्रियास। सबसे पहले पैंक्रियास। पैंक्रियास
इज अ मिक्स ग्लैंड, फ्लैट लीफ लाइक है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैंक्रियास का 99% पार्ट एक्सोक्राइन है, ये बात ध्यान में रखो। 99% पार्ट एक्सोक्राइन है, ओनली 1% पार्ट इज एंडोक्राइन। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। 99% एक्सोक्राइन, 1% इज ओनली एंडोक्राइन। और जो उसका एंडोक्राइन पार्ट है उसको आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं, पता है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। उसमें 4 टाइप के सेल है, अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। एफ सेल्स को हम पीपी सेल्स भी बोल सकते हैं। तो अल्फा सेल क्या बनाते हैं, ये 15% होते हैं, ग्लूकेगॉन बनाते हैं। बीटा सेल्स क्या 80% होते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। डेल्टा सेल्स सिर्फ 5% होते हैं, सोमैटोस्टेटिन बनाते हैं। और पीपी सेल्स बनाते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो अभी हर एक का काम क्या है, हर एक का काम जो है वो ऑब्वियस है। सो बेसिकली मैं व्हाइट बोर्ड पे शेयर करता हूँ। देखो, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन शो एंटागोनिज्म। व्हाट इज एंटागोनिज्म? अपोजिट एक्शन। इंसुलिन का काम क्या है? टू डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। और ग्लूकेगॉन का काम क्या है? टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड। तो ये मत सोचो ब्लड को ग्लूकोज को डिक्रीज कर रहा है मतलब नॉर्मल पे ला रहा है, नॉर्मल से डिक्रीज नहीं कर रहा है। सिमिलरली ग्लूकेगॉन भी इंक्रीज कर रहा है नॉर्मल पे लाने के लिए। तो दोनों बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। अब देखो, यू हैव टू नोट दिस टर्म्स। ग्लाइको, आपको पता है एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, यू नो दैट ना। यहाँ पे 3 वर्ड्स है। तीन वर्ड्स है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन। तो एक्सेस ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन। ये काम कौन करेगा बोलो? बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज, देखो जब ग्लूकोज ज्यादा होता है, सपोज आपने बहुत चॉकलेट्स खाई, मिठाई खाई, स्वीट्स खाई, आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, तो भी इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन क्या करता है? एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, यू नो, इट हेल्प्स दैट टू स्टोर इन द लिवर एंड द मसल्स। ग्लाइकोजन लिवर मसल में स्टोर हो जाता है। तो ये बेसिकली ब्लड के ग्लूकोज को घटा के उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर मसल्स को स्टोर करवाता है। सो ग्लाइकोजेनेसिस का जो काम है दैट इज डन बाय इंसुलिन। ग्लूकेगॉन उल्टा काम करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तभी ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या? ये ब्लड के जो लिवर और मसल्स में जो एक ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको ये वापस किस में कन्वर्ट करवाएगा? ग्लूकोज में। इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। समझा? अपोजिट वर्क। सो बेसिकली इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन है ना, खुद ग्लूकोज को कम नहीं करता, वो लिवर सेल्स और मसल्स में इनका अपटेक इंक्रीज करता है। ग्लाइकोजन increase uptake in the liver and muscles. So glycogenesis is done by insulin, glycogenolysis done by glucagon. Gluconeogenesis अलग है, it is formation of the glucose from proteins. ये मैल न्यूट्रिशन में होता है, क्वाशियोरकर मैरिस्टस में, जहाँ पे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, खाना पीना है ही नहीं,
तो proteins, body is forced to utilize the proteins. So proteins are converted into glucose. That is called gluconeogenesis. Neo means new source from proteins. अच्छा, अभी इंसुलिन की कमी से क्या होता है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटिस. से मेलाइटिस मतलब लाइक व्हाट, मेलाइटिस का मतलब है हनी. सो ब्लड बनता है मीठा, इसलिए मेलाइटिस. दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. तो याद रखो, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं हो रहा है. इंसुलिन जब कम है तब तब होता ही है, नॉट ड्यू टू ईटिंग स्वीट्स. स्वीट्स खाओगे तो इंसुलिन संभाल लेगा ना, लेकिन इंसुलिन नहीं बन रहा है, बीटा सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम होगा. समझो, आपको डायबिटीज मेलाइटिस का रीजन क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, प्रॉब्लम इन द बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस. अच्छा, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप की डायबिटीज है. डायबिटीज मेलाइटिस की बात कर रहा हूँ. टाइप 1, टाइप 2. डायबिटीज मेलाइटिस, इंसिपिडस को जाने दो, इंसिपिडस तो वो अलग ही है. डायबिटीज इंसिपिडस इज एडीएच का डेफिशिएंसी, वो अलग है. मैं डायबिटीज मेलाइटिस की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल डायबिटीज है ना, ब्लड का, शुगर का. उसमें दो टाइप से, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 जो डायबिटीज है, दैट इज कॉल्ड आईडीडीएम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीडीएम? टाइप 1, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. टाइप 1 डायबिटीज जो है ना, ये रेयर है. टाइप 1 डायबिटीज रेयर है. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन है ना जन्म से ही नहीं बनता. इसमें जन्म से इंसुलिन बनता ही नहीं है, मतलब बीटा सेल्स में जेनेटिक प्रॉब्लम है, इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है. समझा? दैट इज कॉल्ड टाइप 1. इंसुलिन डिपेंडेंट, इनको जन्म से इंसुलिन का इंजेक्शन या गोली लेनी पड़ती है. आपको फर्क समझ में आ रहा है इसमें? टाइप 1 टाइप 2 में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि टाइप 1 is called as what? IDDM. That is the insulin dependent diabetes mellitus. So in the insulin dependent diabetes mellitus, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस का इशू क्या है कि उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है. तो उनको, ये लोग जन्म से इंसुलिन पे डिपेंडेंट है. इट इज सिंस बर्थ. ठीक है. और जो टाइप 2 है ना, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, राइट? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, या NIDDM बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. एक आईडीडीएम, एक NIDDM. आईडीडीएम मतलब क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. NIDDM मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. ये टाइप 2 है. और टाइप 2 कॉमन है, सबसे कॉमन है 30s 40s के बाद आजकल हो रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ मेनली स्ट्रेस. मीठा खाने से नहीं हो रहा है, टेंशन से हो रहा है, स्ट्रेस. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा मत समझो कि इंसुलिन नहीं बन रहा है. ऐसा नहीं कि जो टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन इंसुलिन बनने के बाद भी वो काम नहीं कर पा रहा है. बन रहा है, लेकिन वो, मतलब जो लिवर और मसल सेल्स है ना, वो इंसुलिन का सुन नहीं रहे. इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को, देखो, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, इसको लिवर और मसल में स्टोर करवाना. लेकिन अभी, मतलब लिवर और मसल सेल्स है ना, उसका रेजिस्टेंट हो गया, दे आर नॉट लिसनिंग टू इट. समझा? मतलब इंसुलिन बन रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है. वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर मसल में स्टोर नहीं कर पा रहा है. दैट इज कॉल्ड टाइप 2. तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है. इसमें कैसा है, इसमें इंसुलिन इंजेक्शन की हमेशा जरूरत नहीं है, इसमें गोलियों से, एक्सरसाइज से काम हो सकता है. सो इट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन. सो NIDDM. सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन है,
अच्छा, तो इंसुलिन की कमी से ये डायबिटीज होता है, मेलाइटिस। अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपर इंसुलिज्म। हाइपर इंसुलिज्म मतलब क्या? अगर इंसुलिन ज्यादा बना बॉडी में, जो कि रेयर सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिज्म। सो इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज को कम करना। तो एक्स्ट्रा इंसुलिन बना, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बना, तो वो ब्लड ग्लूकोज को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। और ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा एक्सेस कम हो जाएगा तो इट पर्सन कैन गो इन कोमा एंड कॉज डेथ। दैट इज कॉल्ड इंसुलिन शॉक। ये भी बहुत सीवियर कंडीशन है, जिसमें इंसुलिन ज्यादा बन रहा है उल्टा, तो ज्यादा ही ग्लूकोज को कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि ब्लड में ग्लूकोज ही कम है, तो कोमा में जा सकते हैं। तो इनको ग्लूकोज का सलाइन लगाना है, सो सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा। देखो, सोमैटोस्टैटिन इज सिमिलर टू द ग्रोथ हार्मोन का इनिबिशन करता ही है, और ये इंसुलिन ग्लूकेगॉन को भी इनिबिट करता है, कंट्रोल में रखता है। और जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ये हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ द यू नो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, और एक्सेस एंजाइम्स हार्मोन बनने नहीं देता। राइट, ये सोमैटोस्टैटिन को कम करता है। तो देखो, ये दोनों टाइप के जो डायबिटीज से दोनों अलग है। डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की कमी है, और इंसुलिन कम है इसलिए ब्लड में शुगर हाई है। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या है? एडीएच की कमी है, और एडीएच की कमी होने से एक्सेस वाटर इज देयर इन द यूरिन। तो यहाँ पे ये यूरिन का डायबिटीज है, या वो एक ब्लड का डायबिटीज है, एक यूरिन का है। इसमें इंसुलिन की कमी है, इसलिए शुगर ज्यादा है ब्लड में। यहाँ एडीएच की कमी है, और एडीएच कम होने से पानी ज्यादा है यूरिन में। तो यहाँ पे ब्लड मीठा बन जाता है, दैट इज मेलाइटस। यहाँ पे यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, पानीदार हो जाता है, दैट इज वाई इंसिपिडस। द वर्ड इंसिपिड स्टैंड्स फॉर वाटरी। सो वाटरी यूरिन। डायबिटीज मेलाइटिस में देखो, कीटोनूरिया होता है, कीटोन बॉडीज होता है। कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज। ये एड्रीनल का एमसीक्यू इसलिए बोल रहा हूँ, सॉल्व करो पहले। 48, सॉल्व एमसीक्यू नंबर 48, कनेक्टेड विद एड्रीनल ग्लैंड। 48।
Yes, 48 ka, what is the answer that you've given? 48 is B बोल रहा है, कोई D बोल रहा है. Which is not an effect of androgen in males. Male में पूछा है. Facial hair तो होता है. Muscular growth है. Yes, very good. High pitch voice नहीं है. See, remember, see, males में जो pitch होता है ना voice का, वो male में low pitch होता है. Females में high pitch voice होता है. In the males it is a low pitch, and in the females it is a high pitch voice. So low pitch voice for the males and high pitch for the females. Okay, so accordingly the answer is option B. That is correct. चलो पैंक्रियास के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. सॉल्व एमसीक्यू नंबर 41. अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? अल्फा सेल सिक्रीट 41 का बी है ग्लूकेगॉन, विच इज करेक्ट. परफेक्ट. 42 सॉल्व करो. विच इज द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन? हाइपर मतलब इंक्रीज करने वाला. हाइपरग्लाइसेमिक. हाइपर मीन्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज. ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को इंक्रीज करता है? सो इट विल बी कॉल्ड एज द हाइपरग्लाइसेमिक. Yes, very good. Glucagon, because glucagon will increase, no? So it is a hyperglycemic hormone. It will increase the glucose level of the blood. So it is hyperglycemic. That is right. 43. Solve MCQ number 43. What does glucagon stimulate? Glucagon जो है वो stimulates glycogenolysis, लेकिन कौन से cells में? 43.
Yes, so answer for 43. 43 ka you have said E, that is the right answer, hepatic cells. So see, it stimulates the glycogenolysis in the hepatic cell ना, क्योंकि liver से होगा. Liver में glycogen stored है, तो liver में ये it will cause the breakdown of the glycogen from the liver cells. Yes, very good. So 44 solve karo. Pancreatic hormones are the pancreas hormones, are they steroids? Are they peptides? Are they amino acid derivatives? Yes, बोलो pancreatic hormones किसमें आएंगे? They are the very good, Simona, you're right. They are the peptides. They are the peptide hormones. चलो perfect. 45 का बताओ. Insulin acts on. Solve for 45. Insulin किसके ऊपर act करता है? Very good. 45 का very good answer, Nikita. It and Ashish, Simona, no problem. See, insulin will act on the hepatocytes and adipocytes. Hemocytes तो blood cells है और अपने बॉडी में से hemocytes होते ही नहीं है ना. इंसुलिन कभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पे काम नहीं करता, हिपेटोसाइट पे काम करेगा ना, बिकॉज इट विल कन्वर्ट द 100% हिपेटोसाइट्स पे काम करेगा, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज को वो लिवर में डाल देगा और मसल्स में डाल देगा ना, तो एडिपोसाइट्स, चर्बी एडिपोसाइट्स फैट सेल्स में. ठीक है. So chalo guys, we have completed a lot of MCQs today. Time is already up. So I will continue this chapter. Next lecture, this we will complete this chapter. Saturday को अगर अपना lecture है तो remaining glands और 3-4 glands, 4-5 glands बाकी है और कुछ MCQs बाकी है. So this chapter will be completed on the next lecture. So thank you so much. Take care. Everyone be safe. Bye bye. Okay, welcome. Bye bye guys. Thank you, sir. Bye. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Welcome. Bye bye.